everyone, and welcome to Gyan Bridge. A big congratulations to all of you for making it to class 10th. This is your board exam year, and I know it feels a little intimidating. But take a deep breath because you are at the right place. If you are thinking class 10th math is just memorizing some boring formulas or dividing numbers recklessly, you are playing the game wrong. Our chapter 1, real number, is just a massive puzzle, and I am going to give you cheat codes to beat it. In this video, we today understand the number family, and I am going to show you some tricks to solve HCF and LCM. So grab a notebook and a pen and get ready. So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हमारे चैप्टर्स के कैरेक्टर्स के बारे में समझना पड़ेगा. Our first character is real number. Now what do you mean by real number? A number which you can represent on a number line or any number which exists in this world is known as real numbers. It is further divided into some groups. Our first group is natural number. आप नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हो. लाइक अगर मैं आपको बोलूं काउंट द नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट, सो कहां से स्टार्ट करोगे आप? 1 2 3 एंड so on. So these numbers are natural, or you can say these are counting numbers. Our next group is whole numbers. वैसे तो आपने ये सब पढ़ रखा है क्लास 9th में, but just for the revision you have to understand the basic terms. Okay, now if I include 0 in these natural numbers, that becomes your whole numbers. The next part is integers. If negative numbers are also included in these whole numbers, that becomes your integers, like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, now you understand the three groups: natural number, whole number and integers. Now there are two main groups that is very necessary for your class 10th and your chapter. That is your rational numbers and irrational numbers. Clear? Your rational numbers are the numbers which you can represent in the form of P by Q, where P and Q are integers. Alright, and Q is not equal to 0. Then you call them as rational numbers. There are so many examples like 2, 3, 4, 7 by 8. These all are your natural numbers. These can be your repeated numbers because you can represent the repeated numbers as a P by Q form. Alright, then comes to next are irrational numbers. ये तो बचपन से करते आ रहे हैं कि अगर वो रेशनल नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे. The numbers which can't be represented in P by Q form. ओके, और आप ये भी बोल सकते हैं जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल √2, √3 and pi. And I will discuss that pi is an irrational number. How? Do you know the value of pi is 22 by 7? Still I am calling it as irrational. Okay, I will put a short on this concept why pi is a irrational number, so it will get clear to you. All right, so अभी तक हमने क्या किया? First, the real numbers. Real numbers are those numbers which can be represented on the
real line or number line, or you can say that exist in this world, any number that can exist in this world. Clear? Our next group is natural numbers. These are counting numbers, or like 1 2 3 dot 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 n. And next are whole numbers. The numbers including 0 in the natural numbers, it becomes your whole numbers. If you include negative numbers in the whole numbers, then that becomes your integers. And the two main groups are rational numbers and irrational numbers. The numbers which you can represent in the form of p by q, that will be called your rational numbers, and that can't be represented in the p by q form, that is called your irrational number. I think it is clear to you. Now some basic terms, or you can say labels, that are given to our numbers, we will discuss. So there are basically three main labels that is necessary for this chapter to understand. First is your prime number. What do you mean by prime number? The number which are not divisible by any other number than itself. Or you can say that prime numbers are the numbers which have only two factors, 1 and itself. If we can take an example like 7. If you make the factors of 7, it will be 1 cross 7. Okay. Now next is composite number. What do you mean by composite number? The numbers which are not prime numbers is known as composite numbers. These numbers can be broken into pieces. Okay? Or you can say these numbers have factors other than 1 or itself. Like for example 15. So what are the factors of 15? 1, 3, 5, 15. Okay. So these are your composite numbers. Now the main and secret weapon in this chapter are co-prime numbers. This is our secret weapon. Please focus on this. This is very important. Co-prime numbers. Co-prime numbers are the numbers which have no common factor other than 1. Please listen it carefully. Co-prime numbers are the numbers which have no common factor other than 1. Okay, for example 7 and 8. It shares no common factor other than 1. 1 is the only factor that is common in 7 and 8. 14 and 17. These are also co-prime numbers because they have only one factor, that is 1. Okay, these are also our co-prime numbers. Why I am calling it a secret weapon, you will understand in the further questions. Okay, please remember that co-prime numbers. So our next topic is the fundamental theorem of arithmetic. अब सुनने में ऐसा लग रहा है कि कुछ मुश्किल कॉलेज का कंसेप्ट है, बट नहीं. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या कहता है कि दैट एवरी कंपोजिट नंबर is nothing just the bunch of prime numbers, or you can say that any composite number can be represented as the product of prime numbers. That's all. Like take an example, any composite number like 20. So ये क्या कहता है कि आप 20 को as a product of prime numbers शो कर सकते हैं. आइए दिखाता हूँ. You know how to find the prime factors of 20? ये हम 7th 8th 9th 10th क्लास तक करते ही रहते हैं. So 20. So we know first it is divisible by 2. So it gives us 10, then 2, then 5, 5 more. So 20 is a composite number and it can be represented as a product of prime numbers. Okay, that's the fundamental theorem of arithmetic.
ठीक है, इसका यूज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे उसके अंदर समझ में आएगा कि कहाँ पे ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वर्क करती है। ऑलराइट, सो हियर कम्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, आपको 140 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स दिखाना है। सो कैसे शो करेंगे हम? लैडर मेथड से। दिस इज योर लैडर मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 140 की और 140 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स दिखाना है। सो 140 इज अ इवन नंबर, सो वी नो इवन नंबर्स। व्हाट इज इवन नंबर्स? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। सो हमारा 2 भी क्या है? डिविजिबल है 180 से, तो क्या लिख दोगे? 70। नाउ अगेन end is 0 and we know the number if ends with 0 is divisible by 2. So again it is divisible by 2. Now it ends with 5 and we know the divisibility rule. If a number is and if any number ends with 5 it is divisible by 5 and 5 is a prime number. Here comes our last 7. So we can represent 140 as a product of prime numbers. ठीक है, अगर आपको अपनी क्लास में प्रो बनना है तो यू कैन राइट इट एज 2 raised to the power 2 5 cross 7. Okay, it looks cool when you write in the form of power, or it will help you in HCF and LCM. Okay, so see, the next topic is HCF and LCM. So our next topic is HCF and LCM. आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा HCF और LCM के। HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आपने HCF और LCM निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखे होंगे। बेसिकली HCF होता क्या है? HCF एक ऐसा कॉमन फैक्टर या ऐसा एक नंबर हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, ठीक है, और रिमाइंडर क्या छोड़े? 0। इसके अंदर हम एक ऐसा मल्टीपल ढूंढ रहे होते हैं जिससे उस नंबर को अगर हम दोनों नंबर से डिवाइड करवाएं तो उसका रिमाइंडर क्या आए? 0। ठीक है, लेकिन इस बार या इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं। इसको एज अ गेम लो। HCF को नाम दे देते हैं हम द कोर स्क्वाड। ऑलराइट, गिव इट अ नेम द कोर स्क्वाड। और LCM को नेम दीजिए आप द ड्रीम टीम। ऑलराइट, इस टीम का जो मोटो है वो क्या है? लोएस्ट पावर एंड कॉमन फैक्टर। और इस टीम का जो लोगो है हाईएस्ट पावर टेक एवरीवन। ठीक है, हमने HCF टीम का नाम रखा द कोर स्क्वाड और उस टीम का जो मोटो है वो क्या है? लोएस्ट पावर कॉमन फैक्टर। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हमने टीम का नाम रखा द ड्रीम टीम और उसका जो मोटो रहेगा हाईएस्ट पावर एंड टेक एवरीवन। ऑलराइट, नाउ सी एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको कुछ समझाता हूं कि कैसे ये मोटो आपके लिए काम करेगा। सपोज you have to find the HCF of 12 and 9. Now we have to make the factors of 12. What are the factors of 12? 2, then again 2, then 3. We can represent 12 as 2 cross 3. और मैंने आपको प्रो मेथड समझाया था ना कि प्रो बच्चा क्या करेगा? 2 raised to the power 2 cross 3 और 9 के फैक्टर्स 3 cross 3, that is 3 raised to the power 2. Now what is your HCF? That is logo is lowest power common factor. Alright, so what is common here? Is 2 common? No, because there is no 2 in the factors of
9, सो हम 2 को तो लेंगे ही नहीं। और हमारे पास क्या है, 3 फैक्टर है। यहाँ 3 की जो पावर है वो क्या है 1, और यहाँ पावर क्या है 2, लेकिन हमारा मोटो क्या कहता है लोएस्ट पावर। सो योर HCF इज 3 raised to the power 1, और यू कैन से 3। इज इट ऑल राइट? सेम एग्जाम्पल हम किस में लेंगे, एलसीएम में। लाइक यू वांट टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 and 9. Now the factors of 12 are 2 cross 3, that is 2 raised to the power 2 cross 3 raised to the power 1, and 9 3 raised to the power 2. And what is our motto? Take everyone highest power. ओके कहता है कि सभी को लो। तो सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करते हैं, 2 raised to the power 2। यहाँ कोई 2 raised to the power 2 नहीं है, लेकिन इसका मोटो है टेक एवरीवन। सो हमें 2 raised to the power 2 क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। नाउ 3 raised to the power 1, 3 raised to the power 2, पर इसका मोटो क्या है हाईएस्ट पावर। सो क्या लेंगे 3 raised to the power 2। दिस इज योर 2 raised to the power 2 4, 3 raised to the power 3 is, this is your 36, and the LCM of 12 and 9 is 36, and LCM of 12 and 9 is 3। ऑलराइट, अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कि जो आपका प्रोडक्ट होता है HCF और LCM का, वो किसके इक्वल होगा, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ये आपका एक सबसे मेन फॉर्मूला है जो आपको HCF और LCM फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, आपके पास 2 नंबर्स दिए होंगे और आपको HCF फाइंड आउट करना होगा, देन LCM फाइंड आउट करना होगा। क्लियर? हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। HCF कितना आया था 3, LCM कितना आया था 36। ऑलराइट, 3 मल्टीप्लाई बाय 36 इज 108। ओके, A is 12, B is 9, and 12 nines are, so left hand side is equals to right hand side। यहां से आपका ये फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। बट रिमेंबर दैट ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही अप्लाई होगा। अगर आपके पास 3 नंबर्स आ जाए और उसमें आपको HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई नहीं होगा। रिमेंबर दैट ऑलवेज। Okay, now we move on to the next question. So our next question is, find the LCM of 26 and 91 and verify LCM cross HCF is equals to the product of 2 numbers. So are you ready to solve it? Okay. So first of all you have to find the prime factors of 26. It is an even number, so we know it is divisible by 2, and this is your 13, so it is 2 cross 13. Now prime factors of 91, it is a odd number, let's try it with 3. No, it is not divisible by 3, it is divisible by 7. 7 ones are 7 and 7 threes are 21, so 31. So 7 cross 30. Now remember our motto for HCF: lowest power common factor. So here every number has a power 1 and HCF का जो मोटो है वो है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या है इसके अंदर, दोनों के अंदर 13 कॉमन है, और लोएस्ट पावर यहाँ तो सिर्फ 13 की पावर 1 है, तो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो HCF कितना हो जाएगा 13। क्लियर? नाउ रिमेंबर द मोटो ऑफ LCM. What is the motto of LCM? Highest power, take everyone. Okay, so here 2 has the highest power 1, 13 has the highest power 1, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, so we take it as 13 raised to the power 1. Now 7 also have power raised to the power 1, so हमने सभी को ले लिया और हाईएस्ट पावर को भी सेटिस्फाई करवा दिया। So it is your
LCM is 182. Now we have to verify, does LCM cross HCF is equals to the product of two numbers. HCF cross LCM. 13 multiplied by 182 and A cross B product of numbers, that is 26 multiplied by 91. ओके, आप अपनी नोटबुक में इसको वेरीफाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो फास्टली एंड जस्ट सॉल्व इट. 2366. Now you have to multiply by 91. It is also 2366. All right. So HCF के लिए please remember our motto, lowest power common factor, and LCM के लिए highest power take everyone. आपको सभी को लेना है, लेकिन जो कॉमन है उसमें सिर्फ हाईएस्ट पावर को लेना है. Clear? All right. So today we have understood the concept of real numbers, prime factorizations, the arithmetic theorem, and also the HCF and LCM concept. Okay, this is your homework problem. Answer it in the comment section. Also, you can join me on Telegram and Insta, Facebook. I will provide all the links in the description. All right. Thank you so much for joining and watching my first video. See you in the next part. Till then, keep practicing, keep solving.